It's University of Hyderabad. Exams are nearby. I thought I will continue with my 1000 MCQs and do 50 questions with you all. So without any further delay, let us start. This is part 6. The last part we did was part 5. So today's is part 6. Before I start, let me tell you all that Unacademy is going to raise the prices of 3 months and 1 month subscription very soon. So all the students who want to appear for the upcoming exams, you wish to join, please do that before this. Antarachak is my referral code. ये आप लोगों को already पता है. You can use it if you people wish to join. So let us start with the questions directly. कल हमने कुछ क्वेश्चंस किया था, उसका मैं आंसर देना चाहती हूँ आप लोगों को. कल इस क्वेश्चन पे हमारा डाउट था कि इनमें से कौन सा सही है हैबिटस से रिलेटेड. द करेक्ट आंसर इज नंबर डी. हैबिटस इज अ स्ट्रक्चरिंग स्ट्रक्चर. हैबिटस इंडिविजुअल प्रोसेस से क्रिएट नहीं होता है, इट इज सोशल प्रोसेस. हैबिटस ऑपोजिट नहीं होता है फील्ड से, इट इज रिलेटेड टू फील्ड. एंड हैबिटस इज not an objectified reality. Habitus is something that is socially created and hence it is not in the objective form. Therefore habitus is a structuring structure, means it's like socialization. हमें सिखा रहा है चीजें. So number D is correct that way. The next question I would like to say that, so in the next question I would like to give number B as not true, because modernization focused on why of development correct rather than how to achieve it. Modernization theories ने बोला था how to achieve it. इन लोगों ने बोला था कि अगर आप ये सारे steps follow करेंगे as Rostow's theory or any other modernization theories, they do tell us. So this statement is not true, whereas the others are true. Dependency theory over focuses on underdevelopment. Modernization theory is inspired by evolutionism, diffusionism, etc. Dependency theory emerges in Latin America. That is also correct. Let's see the next one now. So this is the definition that I wanted to give you people regarding Bourdieu's definition of habitus, that it is a structuring structure which organizes practices and perception of practices, etc. So you people can go through this definition. Which of the following is the correct match of columns? These are some very famous books that you people need to match. We all know that Rostow has written the book Stages of Economic Growth. So A is equal to number 3. The next easy is A.G. Frank's theory of underdevelopment. So C is equal to number 4. With that we already get our answer, that is number B. David McLennan has written the N achievement model and Alex Inclis has written the book Model of a Modern Man. The concept of cultural capital is associated with Pierre Bourdieu, so the answer is number D. Review of literature moves from what? Guys, review of literature पहले हम लोग general चीजों को देखते हैं, उसके बाद specifically हमारे topic पे आते हैं. Therefore, the correct answer is general to specific. Discovery of Grounded Theory is a book that is written by Glaser and Strauss. Qualitative analysis involves regression, axial coding, random sampling. ये सारे quantitative है. बस अगर आप responses को average out करेंगे, उनको moderate करेंगे, they are more or less qualitative analysis. The Methodology of Social Sciences बहुत ज़्यादा famous किताब है Max Weber का. The title of the book written by Gopal Guru and Sundar Sarukkai, इनमें जितने भी books हैं उनमें से The Cracked Mirror is the book written by Gopal Guru and Sundar Sarukkai. Next question आपसे पूछ रहा है कि Max Weber ने कौन से किताब में, in which book does he introduce the methodological individualism context? So the methodological individualism he introduces in the first chapter of the book Economy and Society. So please note it down. According to Marx, formal subsumption of labor under capital, यानी कि labor को हम लोग appropriate कैसे करते हैं, Marxism में क्या कहा जाता है? When capital revolutionizes the process of labor through mechanization, यानी कि labor को और ज़्यादा mechanize कर देता है. When the capital produces surplus value through the lengthening of the working day, intensification of exploitation, यानी कि surplus value दो तरीके के होते हैं, relative and absolute. एक में आप जो दिन है वो ज़्यादा आप लंबा कर देते हैं, you make the day longer. Another is you keep the day short as it was, but you make the labor more exploitative, more intensive. यानी कम टाइम में आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो. या फिर ऑप्शन सी, capital revolutionizes the process of labor through super automation and robots. None of the above. This is very clear. It is number B, which is talking about surplus value कैसे generate होती है through relative and absolute surplus value idea.
अकॉर्डिंग टू हेगल्स आइडिया ऑफ डायलेक्टिक्स, लॉजिक इज नॉट, यानी कि डायलेक्टिक्स में इनमें से कौन सा चीज नहीं दिखाई देता है, सिंपली द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ वैलिड सिलोजिज्म्स about the process of reasoning that both generates the forms and moves beyond. This is correct, क्योंकि हम लोग थीसिस से एंटीथीसिस बनाते हैं, फिर एंटीथीसिस से सिंथेसिस में जाते हैं. रीजनिंग अबाउट रीजनिंग, आप थीसिस पे रीजन करके फिर से एंटीथीसिस बना रहे हो. थॉट थिंकिंग अबाउट इटसेल्फ, अगेन द सेम मीनिंग, आप एक एक थॉट को अपने आप सोच के आगे बढ़ रहे हो. therefore the correct answer is number A. आप सिंपली एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ वैलिड सिलोजिज्म नहीं ढूंढ के निकालते हैं, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को मैं बहुत ही ज्यादा फोकस करवाना चाहती हूँ, क्योंकि हमने कल एक सिमिलर क्वेश्चन किया था जहां पे आई हैड गिवन यू पीपल द आंसर डर्कहाइम, जबकि इस क्वेश्चन में डर्कहाइम है ही नहीं ऑप्शंस में. द ओनली ऑप्शन दैट इज कॉमन इज हैरियट मार्टिनी, दैट शोज कि इन्होंने इस पे काम किया था. तो कल का जो वीडियो था उसके कमेंट सेक्शन पे भी मैंने करेक्ट कर दिया है. आई होप यू पीपल गो चेक. सो इट सेज कि अंडरस्टैंडिंग क्राइम एंड फॉर्म्स ऑफ जस्टिस इज एन इंपॉर्टेंट इंडेक्स टू द मॉडल नोशंस ऑफ द सोसाइटी, यानी कि क्राइम को समझना सोसाइटी के मॉडल नोशंस के लिए इंपॉर्टेंट है. तो उसका आंसर डर्कहाइम नहीं होगा, इट्स हैरियट मार्टिनी ओनली, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस में यही एक ऑप्शन हमारा कॉमन है. In political and national communities, it is Durkheim's thesis that in great crisis, the suicide rate falls. Now, this is a very good tricky question. अगर सोसाइटी में बहुत ज्यादा क्राइसिस है तो सुइसाइड रेट फॉल कर जाता है, क्योंकि लोग इंटीग्रेटेड नहीं होते हैं, क्योंकि लोग डिसइंटीग्रेटेड होते हैं एंड इट डज नॉट मैटर एट ऑल. लोग बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड होते हैं एंड दे पार्टिसिपेट एक्टिवली, none of the above. Now this is actually a trick question to check whether you people know or not. In great crisis you cannot have a falling rate of suicide, you will have more suicide. So anomic suicide हो या फिर egoistic suicide हो, वो बढ़ जाता है. Therefore the correct answer is number D. A revised exercise in unified general theory tracing back to functionalism was attempted in 1980s. 1980s में फिर से functionalism के बारे में बात करना, it's nothing but neo functionalism, and we all know the only person who is a neo functionalist here is Jeffrey Alexander. The assertion that functionalism is integral to sociology. Functionalism एक बहुत ही important core है sociology का. We all know it is given by Emile Durkheim. Of course, Davis, Alexander are kinds of functionalists and neo-functionalists. Malinowski is also a functionalist, but in anthropology. So most importantly, it is Durkheim. Interpretative social theory is interested in explaining for the outside rather than understanding from inside, which is not correct. Oriented to emphasizing social forces of what social actors are mostly unaware. Uninterested in understanding how people understand their social situation. I think this is correct. None of the above नहीं होगा. Option B is correct. जहाँ पे हम social actors को किन चीजों के बारे में नहीं पता, उसके अंदर जाके उनके in depth में जाके हम लोग सिनेरियो को समझते हैं. Reacting against existentialist Marxism, who among the following Marxists developed a structural Marxism. Now we all know that structural Marxism हम लोग Louis Althusser के नाम के बाद लगाते हैं. Therefore the correct answer is Louis Althusser, who was a very famous structural Marxist. The term structuration एंथनी गिडेंस ने अपने कौन से किताब में दिया था, ये मैंने काफी बार आप लोगों को पढ़ाया है. The correct answer is Constitution of Society. Interpellation refers to what? Interpellation is a concept of Althusser. देख लेते हैं options. The way that individual is encouraged to see himself or herself free from social forces. Operation of control structures not maintained by physical force. In a democracy, that individual is presumed to make choices, but such choices would have already been made. The correct answer is number C. To those students who do not know, interpellation is quite similar to Durkheimian social fact, जहाँ पे ये कहा जाता है कि सोसाइटी में हम जो भी चीजें सीख रहे हैं वो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है. सो अगर मैं कोई चॉइस, मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरा चॉइस है, मैंने ये चूज किया है, बट वो चॉइस भी तो आपको दिया गया है, आपको 2 चॉइसेस दिया गया है, उनमें से आपने चूज किया है. सो इंटरपेलेशन मीन्स वेयर वी थिंक वी आर फ्री बट एक्चुअली वी आर नॉट. Which of the following can be associated with post-structuralism? That reality is constant, reality itself is textual. दोनों statement गलत है. First of all, post-structuralism ये नहीं मानता है कि reality is constant. Number 2, reality को वो लोग textual से बाहर निकालना चाहते हैं, जैसे डरिडा ने अपने deconstruction के theory में कहा था. So the correct answer is none of the above.
क्वेश्चन नंबर 18 इज आस्किंग यू जेनेटिक स्ट्रक्चरलिज्म हम लोग किसके साथ रिलेट करते हैं? आई हैव टॉट यू पीपल दीज सेवरल टाइम्स. द करेक्ट आंसर इज पियर बोर्तो. According to Michel Foucault, power is not a substance but relational. Power is not an institution or structure. Power is a complex strategic situation in a particular society. All of the above. All these statements are correct. Foucault बोलते हैं कि पावर कोई ऐसी चीज नहीं है, how Durkheim would call social facts, it's a powerful thing which is coercing us. ऐसा नहीं है, it's relational. It's neither an institution, it's just a strategic situation that we are in. Therefore, the correct answer is number D. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अंबेडकर के हिसाब से करेक्ट है? कल्चरल नेशनलिज्म इज डिजायरेबल? डेफिनेटली नॉट. ही वाज नेवर इन सपोर्ट ऑफ नेशनलिज्म. इंडियन विलेजेस आर सेल्फ सफिशिएंट रिपब्लिक्स, ये तो गांधी ने कहा था. इंडियन मासेस शुड होल्ड द नेशन एज सैक्रोसैंक्ट. नो, ही डज नॉट से कि नेशन को सेक्रेट मानो. इंडियन विलेज लाइफ इज अ वेरी निगेशन ऑफ रिपब्लिक. दैट इज करेक्ट, क्योंकि वो इंडियन विलेज को क्रिटिसाइज करते हैं. ही सेज कि विलेज में कोई भी रिपब्लिक जैसी चीज है ही नहीं. It's a cesspool of degradation, etc. The term culture industry indicates what? Mass production of cultural artifacts, technological mediation of culture and tradition, manipulation of mass society into passivity, enforcing cultural hegemony of the US. Culture industry का बहुत ही simple definition है mass production of artifacts which are cultural. Culture की चीज़ों को लेके अगर हम लोग फैक्ट्री में जाके उन्हें प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे हम लोग कल्चर इंडस्ट्री बोल सकते हैं. पेनॉप्टिकन का मीनिंग क्या है? दिस इज वेरी ट्रिकी. आई एम प्रिटी श्योर मेनी ऑफ यू माइट मेक मिस्टेक. पेनॉप्टिकन में दो ऐसे ऑप्शंस हैं जहां पे यू माइट गेट मिस्टेकन. ऑब्जर्विंग फ्रॉम एवरी कॉर्नर, ऑब्जर्व्ड विदाउट बीइंग ऑब्जर्व्ड. देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज नंबर सी. यानी कि मुझे पता नहीं कि कोई इंसान मुझे देख रहा है कि नहीं. We all know panopticon as a model was given by Jeremy Bentham, which was developed by Michel Foucault later in his model of surveillance. So he says कि जेल में अगर बीच में पोल हो तो प्रिजनर्स को पता नहीं है कि बीच वाले जेलर्स किन्हें देख रहे हैं. द स्टेट लॉज लिमिटिंग कन्वर्जन इन इंडिया, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे कन्वर्जन अलाउड नहीं है. उन लॉज को हम लोग एंटी कन्वर्जन लॉज बोलते हैं. एंड ऑल्सो टू लेट यू नो, आर्टिकल 25 allows propagation of religion. So ये तो बिल्कुल नहीं होगा. ऑप्शन डी. Who is the author of the book Dominance Without Hegemony? None other than Ranajit Guha, the founder of Subaltern School of History. Which of the following causes greenhouse effect? Greenhouse effect is caused by excess carbon dioxide in the atmosphere, nitrogen in the atmosphere, heat from cooking fires over increasing population से नहीं होता है. It's directly related to carbon dioxide. One of the important aspects of post-industrial society according to Daniel Bell. Daniel Bell ने कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग से हम लोग सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हो रहे हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में. इनमें से पोस्ट डेवलपमेंट वाले थिंकर कौन है? In yesterday's class, I have told you that Arturo Escobar is a very famous post-development thinker. But apart from that, Majid Rahnema has written a book itself known as the Post-Development Reader. So the correct answer is number D. Which of the following is not associated with sustainable development thinking? मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड, यानी कि किसी भी जगह में मैक्सिमम सस्टेनेबिलिटी हो सकता है, इससे बियॉन्ड अगर आप ग्रो करोगे तो वो सस्टेनेबल नहीं है. कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि अर्थ का एक लिमिट होता है, इसको अगर ओवरडोज कर दोगे तो वो खराब है. लिमिट्स टू ग्रोथ एक ऐसा रिपोर्ट है जो क्लब ऑफ रोम ने बनाया था, विच ऑफ कोर्स टॉक्स अबाउट हाउ वी कैन अचीव सस्टेनेबिलिटी, बट वो वर्ड तब तक यूज नहीं हुआ था. बट they are all kind of talking about the sustainable development. Therefore the correct answer is none of the above, क्योंकि इनमें से सारे चीजें sustainability के बारे में बात कर रहे हैं. इनमें से किसने our common future report बनाने में बहुत help की थी? The correct answer is of course Gro Harlem Brundtland. Now many people might get confused कि बाकी लोग भी थे कि नहीं. Donella Meadows is somebody who helped in writing the Club of Rome report, that is limit to growth, not our common future. तो obviously number C भी गलत हो जाएगा, तो ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा. बेनेडिक्ट एंडरसन ने अपने किताब इमेजिन्ड कम्युनिटीज में कहा था कि प्रिंट कैपिटलिज्म के आने के बाद क्या शुरू हुआ था? न्यू सोशल मीडिया, nationalism, religious fanaticism, global capital. Obviously, we all know that Imagined Communities is a book on nationalism. So he says that it gave up or gave way to nationalism.
Iron cage in Max Weber's writing refers to what? This is very easy. The correct answer is increased rationalization in social life, जिसकी वजह से हम iron cages में बंद हो गए हैं. Which of the following can be identified as a defining statement of Louis Dumont's perspective on caste? लुई दुमो ने क्या कहा था? एंड वी ऑल नो लुई दुमो ने नंबर बी के बारे में कहा था कि कास्ट इज अबाउट प्योरिटी, इम्प्योरिटी, द बाइनरी ऑपोजिशन. बाकी सारे ऑप्शंस नहीं होंगे. इनमें से कौन सी बुक कार्ल पॉपर की नहीं है? दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, क्योंकि वो थॉमस कून की किताब है. क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब क्या है? इनिशियल स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, एडवांस्ड स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, नियर टोटल डिक्लाइन ऑफ कैपिटलिज्म, इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज वेल knitted by close, mutually advantageous business leaders and government officials. The correct answer is this. Crony capitalism in simple words means जब business leaders और government एक साथ हाथ मिला लेते हैं. Which of the following concepts is Manuel Castells associated with production of space, space of flows, network theory, time-space compression? Production of space is by Henry Lefebvre. Space of flows is by Manuel Castells. Network theory is not by him. Network theory is by J. Barnes. And network society is by Manuel Castells. Time-space compression is by David Harvey. I think this question is repeated. So, space of flows. Give the correct match of the author with the book. Geraldine Forbes, The City of Dreams. Sanjay Srivastav, City and Sexuality. Ratna Naidu, Debilitating Hyderabad. Saskia Sassen, The Global City. The correct answer is Saskia Sassen wrote the famous book The Global City. Spatial practices term किसने दिया था? The correct answer is Henry Lefebvre in his famous book The Production of Spaces. What does the term gentrification mean? अब gentrification मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी शहर को you're modifying the city to meet the needs of the middle or the upper class. So the correct answer is upgrading the housing to suit the middle class taste. Multiple Modernities is a book by Eisenstein, and in Indian society, TK Woman works on multiple modernities. It's same as alternate modernity. Multiple modernity means कि बहुत सारे modernity के versions हो सकते हैं. आपका ही सही होगा ऐसा नहीं है, उसके बहुत भी विकल्प हो सकते हैं basically. Who is the author of the book Eros and Civilization? Eros and Civilization is a very famous book by Herbert Marcuse. टाइपिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. कहाँ से रिलेटेड? आई हैव टॉट यू पीपल दिस. इट इज रिलेटेड टू द फेनोमेनोलॉजिकल सोशियोलॉजी. इनमें से कौन से थिंकर ने सेल्फ और आइडेंटिटी में अंतर बताया था? दिस इज ऑल्सो क्वाइट इजी. सेल्फ, आइडेंटिटी, स्टिग्मा, दीज आर ऑल put forth or rather focused upon by Erving Goffman. द टर्म डेवलपमेंटल एग्नोस्टिसिज्म यानी कि डेवलपमेंट के खिलाफ या फिर उनके अगेंस्ट में जाके लोगों ने किसने काम किया है? दिस फेमस फ्रेज बिलोंग्स टू स्टीफन मेंडल. एक्सप्लेनस रेफर्स टू व्हाट? एक्सप्लेनेंस सिंपली मीन्स कि जिस चीज का ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, सो दैट विच कंटेन्स द एक्सप्लेनेशन, या फिर एक ऑलरेडी इवेंट या फिर कॉज जिसका एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, एंटीसीडेंट इवेंट और कॉज. सो इनमें से बोथ ऑफ देम विल बी करेक्ट. Who stressed the idea that middle class is born decomposed? Decomposition is a key word for Dahrendorf. Also Dahrendorf says कि middle class decomposed ही born होता है in his thesis of new middle class. Therefore the correct answer is Ralph Dahrendorf. So that was all the 50 questions. I hope it helped you. Do let me know in the comment section if you people have any doubts or any clarifications with any question. I will clarify them in doubts. Thank you so much and all the best for your exams.